मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू को मिला एक और लार्जर देन लाइफ ग्रैंड वेलकम। विनीत जैन, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बेनेट कोलमैन एंड को लिमिटेड ने हरनाज कौर संधू के लिए थ्रो की एक वेलकम पार्टी। हरनाज कौर संधू इस ग्रैंड वेलकम को लेकर देखिए सुपर एक्साइटेड। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू के इंडिया लौटते ही शुरू हुआ सेलिब्रेशन अभी भी जारी है। हरनाज कौर संधू ने जिस तरह इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर प्राउड फील करवाया, उसे हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। और रिसेंटली विनीत जैन, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने हरनाज कौर संधू के लिए थ्रो की एक वेलकम पार्टी, जहां हरनाज कौर संधू को कंग्रेचुलेट करने फिल्म इंडस्ट्री के भी ढेर सारे लोग पहुंचे। हरनाज कौर संधू अपनी इंडिया विजिट के दौरान ढेर सारे कॉजेस को सपोर्ट कर रही हैं और उनमें से एक इम्पोर्टेंट कॉज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। और हरनाज कौर संधू को स्पॉट किया गया एक मेंस्ट्रुअल इक्वालिटी इवेंट पर, जहां उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर की बात और बताया ये कैसे है एक ग्लोबल इशू। I remember my days when I had my first period and I was so uncomfortable to talk about my own menstruation, and that made me realize that I still have the access of pads, I still have the access to talk to a gynecologist, but still I'm uncomfortable. Imagine the girls who don't have access, who are not supported, who are made uncomfortable and taught that it's a taboo to talk about menstrual equity everywhere around the world. I want to break that stigma, and I think we together can do it, because that is leading to period poverty. Period poverty is about when women don't have access to pads, and especially the young girls, they don't know the real education for menstrual equity or menstruation, and they don't have access to it, which leads them to drop out from schools. And due to that, they are unaccomplished towards achieving their goals, and we don't want any girl to go through something which should be a distraction between achieving their goals. इस इवेंट पर हरनाज कौर संधू ने बताया वो कैसे पैडमैन फेम अरुणाचलम मुरुगनंथन की बड़ी फैन है और खुद अरुणाचलम मुरुगनंथन थे इस इवेंट का हिस्सा। It's a great honor again to be a part of this organization. Thank you so much, Mr. Arunachalam, for being a part of this. You have been an inspiration to me and many young women and individuals all around the world. You have broken a lot of stereotypes, and now it's our time to do it together and break more stigmas. इसके अलावा हरनाज कौर संधू ने इस इशू के डिफरेंट एस्पेक्ट पर की बात। It's a problem for all women of all color. They have to go through this a lot of times, and there are a lot of paths in the world, even in India, where women have to choose between food and feminine hygiene products. That's totally wrong, because they both are as equally as important if compared to each other. It should not be a choice. It is essential. It's a part of our body, and we definitely need men to support us. And it's a mission to provide 500 million girls by 2025, and to raise awareness, spread education, and to talk about menstrual equity, so that 500 million girls should not go through that. And more than that, that's just a number, that's just a vision, and I think we will together would be able to make it happen. इस बड़े इवेंट पर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स शामिल हुए, जिसमें थे शाली मुखर्जी, फाउंडर एंड हेड DDB फॉर गुड, Mike Hoffman, chair and co-founder Changing Our World, Paula M. Shugart, President, Miss Universe Organization, CP Arun, Senior Program Manager, Plan India, और अरुणाचलम मुरुगनंथनम, Padman, Social Entrepreneur and Foundation, Jayashree Industries. All in all, ये इवेंट रहा काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग।